Hi everyone, I'm Kashish and today we'll be solving the Code Studio Weekend Contest number 20. So let me just share my screen. I hope I'm audible and visible as well. So I hope all of you have gone through the contest link that was given in the comments. Hmm. So let us begin with the first question. So the question is minimum cost operations. I'll first explain the questions, then we can discuss the approach if necessary. You all can type in the comments if you have any approach and we can verify if that works, and then I'll tell you what I think about the question. So the question is given two integers x and y, you can perform the following operations any number of times on both of them. Increment or decrement any integer by 1 with cost a. Increment or decrement both integers by 1 with cost b. You have to make the integers simultaneously equal to 0 with some operations. That is, x and y have to be 0 ultimately. Your task is to find out the minimum cost needed such that both of these integers are simultaneously 0. Okay. So first let's discuss the approach. So the question says you are given an x and a y. You have to ultimately make them equal to 0. The operations you can do any number of time is you can decrement or increment 1. If you do this to a single integer, that is if you decrement x by 1 or y by 1 or increment them, the cost will be a. And if you increment decrement them by 1 both together, then the cost will be b, and we have to find the minimum cost. So, I hope all of you have understood the question. Is there any approach that comes to your mind, or you want to clear something about the question? If you want some time, do let me know, and then I can tell you how we can proceed with this. I'll go on with my approach then. So, there can be two possibilities. Let's say x is equal to y. In this case, what we can do is we have so we have a relation between x and y, and we have no relation between a and b, that we don't know is a equal to b, a is less than b, or is a greater than b. So in this case, what is possible is you can make x 0 doing decrement on x, that is it will cost you x into a, and then you can decrement y by 1, that will also cost you y into a, that is you did this operation y number of times x number of times and they both became 0 because you decremented them. So this can be one answer. Otherwise you can decrement both of them simultaneously, so it will be x plus y into a or x into b, because you perform decrement x times on both of them, so it cost you b. So total cost will be x by b, x into b. So let me write this clearly. So the first thing was x can be equal to y, and in this case there are two things you can do.
decrement x, decrement y, and make them 0. So to make x 0 by decrementing by 1, you need to do x operations, and doing this alone will cost you a, and this will cost you y into a. So the total cost will be, since x is equal to y, you can also just write x plus y into a, or 2x into a. Same thing because they are equal. Or what you can do is simultaneously make x and y as 0, decrementing both of them by 1, and this will take x number of operations, and because they are done simultaneously, the total cost will be x into b. So one cost you get is 2x into a, and the other you get is x into b. But now you have no relation between a and y, so to get minimum, you need to take minimum of 2xa or xb. I hope this particular part is clear for when x is equal to I. If there are any doubts, do let me know. Otherwise, I'll keep on proceeding. So this is one observation. Now we can see the second case. So let's say if these are not equal, that means either x is greater than y or x is less than y. So let's say a is less than b. A is the minimum of x and y, and b is the maximum of x and y. So a is less than b. A is the smaller of x and y, and b is the greater of x and y. So in this case, what we can do is, first we can decrement b and make it equal to a. So that will require b minus a operations. This is for making b equal to a. And these many operations done alone on b will require b minus a cost. And what happens after these are equal, then we can take the previous approach of when two numbers are equal, and then this will be plus minimum. Now both are equal now, so it will be 2aa or ab. There can be one other case. Let's say you make, here we decremented b minus 1, and then we made it equal to a by decrementing again and again. What we can do is increment a some number of times and make it equal to b. So even this will require b minus a operations and will cost a. But now what happens is a is equal to b, and then in this case we'll have to add 2ba, b and b, because both of them have become equal to small b. Is this part clear? So what will happen is, but here we do not know the relation between capital A and capital B, but we do know the relation between B and A. That is, B is always going to be greater than A because that was our initial assumption. So for this particular one, our answer will be minimum of both the cases. So what happens is B minus A into A is the common part here, and this among these we need to know what will always be minimum. So there are four things: 2aa, ab, 2ba,
small b and capital B. Let's say this is equation 1, 2, 3, and 4. In 1 and 3, we know 1 is always less than 3 because A is less than B. Similarly, in 2 and 4, we know 2 will always be less than 4. So, because we know these four cases will exist simultaneously, we do not need 3 and 4 at all. Because we always know if 3 exists, we can take 1 instead because 1 will be smaller. So, you can directly take minimum of 1 comma 2 and add the common part and you'll get your answer. So let's try implementing this. Let me stop sharing my screen. So let me rename this according to what I'm thinking. It was supposed to be capital A, capital B, and T equals minimum of x comma y, and int B is equal to maximum of x comma y. So our cost of conversion was B minus A into capital A, and then in additional cost when both of them are equal was minimum of 1 comma 2. So 1 comma 2 was 2 into A comma A into B. Then we can simply return cost of conversion plus additional cost. Let's try running this. Seems to work. Chalo, this passed. We can move on to the second question. I hope there's no doubt with the first one. So the second question is maximize the product. Ninja is given an array A of size n. He needs to divide this array. Let's write here only. A of n. He needs to divide this array into exactly two non-empty and non-overlapping subarrays. So if this is non-empty and non-overlapping subarrays, that means it will be divided into exactly two parts. And let's say left and right, and such that the product of sum in both subarrays is maximum. Element should Each element should be in exactly one of two arrays, so it's necessary we take every element. As the answer can be very large, so return it with modulo. Okay, 10 raised to 9 plus 7. So let's see an example first. N equals 4, 2, 1, 3, 4. So if we divide the array into two sub-arrays, 2, 1, 3. So this is continuous. It's not like we can take 1 and 4 together, 2 and 3 together, because this is sub-array and 4 separately. Then the product of the sum of the elements is 6 into 4, 24, which is the maximum we can get by partitioning this array into two non-empty, contiguous and non-overlapping sub-arrays. Okay. ठीक है. So let's go to the whiteboard again and discuss कि क्या कर सकते हैं इस वाले में. ठीक है.
सो वी हैव एन array ऑफ साइज n. हमें इसे एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. Those have to be sub arrays. So sub arrays basically mean if you have 2 3 1 4, it's not a subset, it's a sub array. So it has to be continuous. It's not like 2 और 1 को साथ में क्लब कर दिया, 3 और 4 को साथ में क्लब कर दिया. And the question mentions we have to take each element. It's not like कि 2 3 1 4 है तो हमने आंसर सिर्फ इनके बेस पे निकाल लिया कि इनसे भी मैक्सिमम आ रहा है. We have to include 4 as well. It has to be non-overlapping. So that basically means कि one element, इट्स नॉट लाइक कि हमने ये एरे भी मतलब दो सब एरे लेने हैं तो एक सब एरे ये ले लिया, एक सब एरे ये ले लिया और वन ओवरलैप कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. एक ही मतलब हर एक एलिमेंट किसी एक सब एरे में ही होना चाहिए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वी हैव टू टेक सम ऑफ दीज सब एरेज. वी हैव टू डिवाइड इट, वी हैव टू डिवाइड दिस ऐसे कि जो सम होगा इनका उसका प्रोडक्ट. लेट्स से कि दो सब आ रहे हैं तो एक का सम है ए, एक का है बी. तो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी हैज टू बी मैक्सिमम. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन में कुछ डाउट? आई डोंट थिंक सो. तो ठीक है, लेट्स प्रोसीड. तो अब हम इसमें क्या कर सकते, तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल फर्स्ट. 2 3 1 4. तो इट्स लाइक कि हम 2 ले लिया एक सब एरे में, एक में 4 ले लिया. ये तो वी अंडरस्टैंड कि सब एरे बनाना है और इट हैज टू बी एग्जैक्टली टू सब एरेज. सो ये एक में होगा, ये एक में होगा, बिकॉज दोज हैव टू बी नॉन एम्प्टी. इट्स नॉट लाइक कि हमने सारे एक साइड ले लिए और एक सब एरे एम्प्टी छोड़ दिया, नहीं. सो इट्स फिक्स्ड कि टू मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अलग अलग सब एरे में होंगे. ठीक है, उसके बाद लेट्स से वन पॉइंटर इज हियर, वन पॉइंटर इज हियर and we have to move it. अब there is nothing. प्रोडक्ट के लिए आई डोंट थिंक ऐसा होता है कि हमने मैक्सिमम सम ले लिया तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा. लेट्स ट्राई 2 3. यहाँ पे ये बड़ा है तो वी टेक 3 हियर. सम 5 हो गया एंड यहाँ पे सम 5 हो गया. तो 5 इंटू 5 25. मैंने एग्जाम्पल सही लिया है क्या जो हमने क्वेश्चन में था? क्वेश्चन है 2 1 3 4. ओके, सो वी हैव 2 1 3 4. एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर यहाँ है. 2 इज लेस देन 4, सो हमने यहाँ ले लिया तो अब हमारे पास सम है 3. दिस इज लेस, so we went here and sum is 6. 6 into 4 is 24. ठीक है, this might work. Is there any other example present? 2 minus 1 3. 2 minus 1 3 minus 2 1 and 1. माइनस 2 1 and 1. तो हमें पता है ये अलग जगह होगा, ये अलग जगह होगा. नाउ ये छोटा है तो वी मूव दिस पॉइंटर हियर. नाउ दे आर इक्वल. सो इस केस में वी वोंट नो कि किस साइड प्रोसीड करना चाहिए. सो दैट मीन्स बेसिकली वील हैव टू टेक ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ सब एरेज, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ सब एरेज, बट वी नो कि ये डिवाइड तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा and we need some. Okay, so one thing I think we can do is, जब हमें पता है ये ऐसे कहीं ना कहीं एक डिवीजन का पार्ट आएगा, लेट्स से इसका सम मैं एल में स्टोर करती हूँ. सो दिस विल बी टोटल सम माइनस एल एंड देन वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन एंड देन हाँ, तो वी कैन ट्राई दिस फॉर ऑल कट्स पॉसिबल कि पहले यहाँ कटे फिर यहाँ कटे.
ऐसे we can try, and whatever gives us the maximum answer we can try return. We have to return that. What? ठीक है. So let's start with the implementation. Approach में या implementation में doubt आए तो please do let me know in the comments. I'll try explaining it better. Hmm. So let's first take n equals a dot size. Then हमने पहले सोच, and then m long m equals अभी we need to take the sum first. Total equals 0, and then we can run a loop. It's a type. So we got the total sum, and now okay, let's initialize a left sum as 0. Our answer equals long min. Minimum इसलिए because it's possible that all the values might be negative. So हम इसको 0 से initialize नहीं कर सकते क्योंकि हमें maximum return करना है. So for all the cuts possible, let's say I is equal to 0, I is less than n minus 1, and I plus plus. What this basically means is the left sub array is from 0 to I, and right sub array is from I plus 1 to n minus 1. मैंने यहाँ पे n minus 1 लिया है because we already know कि जो n minus 1th element होगा that will always be to the right side. So उस पे कट लगाने का कोई point नहीं है. तो जब हम पहले कट पे आएंगे तो we should increment our left by the sum, and we can also take a right long r equals total minus जो left में हम already add कर चुके. So our current answer becomes r into l because एक side का sum l में stored है, एक side का sum r में stored है, and we need to take their product. And then we can update our answer by what is maximum answer or the current one. And then simply do answer equals so plus m mod m, and then रिटर्न आंसर. यहाँ पे डायरेक्टली मॉडेम कर सकते थे बट वी नोटिस दैट कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए टू मेक द आंसर पॉजिटिव वी एड मॉड्यूलस. सो लेट्स ट्राई दिस. Current was not initial. Okay, it's current answer. Let's try submitting this. चलो नाइस. अभी स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस में कोई डाउट? एंड आई होप योर तुम सब भी ये क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो बिकॉज द लिंक इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लाइव चैट. आई सपोज इफ इट्स नॉट प्लीज लेट मी नो, आई विल शेयर इट. बट प्लीज ओनली जस्ट डोंट, मतलब क्वेश्चन पढ़ के अप्रोच ट्राई करो, and then do have these questions open with you so that you can try. If there is no doubt, we can move on to the third question. So the problem statement is Ninja management system
is a special way to recognize all managers in Ninja Private Limited. There are N managers, okay, N managers. Each manager in the company has their own skill assigned as an integer. So skill is an integer. Okay. Each manager can have at most two sub managers, and it follows a simple rule. The sub manager on the left of any manager has a skill level. So L skill is strictly less than the manager. Okay, so let M denote the manager. So the M skill is always going to be greater than L skill. And sub manager on the right, if any. अच्छा ठीक है, it's not necessary कि it will have two sub managers. There can be कि एक ही है या दोनों भी नहीं है. And the sub manager on the right has a skill level, so our skill greater than manager. ठीक है. अच्छा, so oh, this is a BST. Your task is to find the kth most skilled. So you have to find the kth skilled in Ninja Management System. ठीक है. So let's discuss an approach and then we can move on to coding. But this is a very straightforward question. Um, so, so the third question is basically there are n managers. Let's say, so this is M. So it can have left child, it can have right child, and then it's also possible it has only L, it has only R, or it has no child at all. And each node represents a skill. Now it was specified key manager's skill लेफ्ट मैन मतलब सब मैनेजर जो होगा लेफ्ट साइड उसकी स्किल विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली लेस देन मैनेजर स्किल एंड राइट साइड में जो होगा his skill is supposed to be always greater. So this is BST's property. So basically the structure provided to us is a BST. What we have to find is kth most skilled. So the question basically becomes find kth largest in a BST. So let's try this with an example. I hope everyone understood why the question basically shifted to the standard problem, which is find kth largest. So let me take an example. So basically, you can see that a tree structure is provided with 7 as the root, 2 as its left child, 9 as its right child. Two's left child is 1, right child is 5, and nine's right child is 14. And this perfectly follows BST's property. लेफ्ट साइड में सब छोटे, राइट साइड में सब बड़े. तो sample input 6 is the number of nodes. Input will have test cases, two integers n and k denoting number of managers and kth manager that we need to find, and then tree दिया हुआ होगा. So इस particular tree में हमें दिया हुआ है कि 6 nodes हैं and we want to find the second most skilled one.
So second most skilled basically means कि यहाँ पे 14 is the largest and ninth is the second largest. So the output should be 9. Hmm, ठीक है. Let's try with this particular one. 314. Hmm. So we want to find the kth largest in a BST. So the example that was given to us was 314, 314 -1 and 2 फिर सब -1. So -1 तो यहाँ पे null and then 2. And इसमें k's value is 1. k is equal to 1 मतलब सबसे largest चाहिए तो which is basically 4. अब we know the standard algorithm for kth largest. What happens is the larger side is always going to be right. So you can start counting कि this is the largest, this is second largest, इसके right side में this is third largest and this is going to be the fourth largest. Let's take a better tree, थोड़ा बड़ा tree लेते हैं. So 7, 6, 8, 10, 12, 3 and 5. ठीक है, this follows BST की प्रॉपर्टी. सेट सब छोटे, सेट सब बड़े. 9 भी आ सकता था, यहाँ पे 9 आ जाएगा. ठीक है. So we can see कि which is which largest. So सबसे right में travel करो, this will be your first largest, then go to its root second largest, फिर left side third. अब इसके कोई right में होता तो पहले हम उसे explore करते, उसके बाद come back 4, 5, फिर हम is this BST, ये साइड आया 3 इससे बड़ा, इसका हाँ ये BST है. ठीक है, इसके राइट में कुछ नहीं है तो we'll explore this itself, so it will be 6. यहाँ पे इसके राइट में कुछ है, so it will be 7. Then we come here, it will be 8. So what we basically do is हम पहले सारे राइट नोड्स पे जाते हैं, फिर हम रूट नोड पे जाते हैं, then we go to the left node. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? Can I apply heap? Can you specify more कि heap किस तरह यूज करने का सोचो, मतलब you will travel every node and then keep storing it in a heap, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करके, या कौन से ऑर्डर ट्रैवर्सल से हीप में स्टोर करोगे? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, नो, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इज बेसिकली लेफ्ट, राइट एंड देन नोड. बट वी आर नॉट डूइंग दैट हियर, आई थिंक. इन ऑर्डर में तो पहले लेफ्ट होता है, फिर सो वी कैन कॉल दिस बेसिकली रिवर्स इन ऑर्डर, क्योंकि इन ऑर्डर इज लेफ्ट, root and then right, but what we are doing is right, root and then left. So this can be reverse in order traversal. यहाँ तक कोई डाउट कि why is this a kth largest or how will we find which is kth node? मतलब किस तरह, every tree question is basically 90% I'll say are related to some or the other traversal. बस ढूंढना होता है कि हम कैसे proceed करें to apply a particular traversal. जैसे अब हमें right root,
हाँ, we are doing right root left, and in order is left root and right. So basically because we know we have to do a traversal, तो हमें पता है यहाँ पे रिकर्जन लगेगा, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन या अपना लॉजिक लगाएंगे और फिर वापस हम यहाँ पे रिकर्जन लगा देंगे. सो वी आर प्रॉब्लम कम्स डाउन टू फिगरिंग आउट कि यहाँ पे जो लॉजिक लगाना है वो क्या लगाना है. सो हमें एक ट्री दे रखा होगा इनपुट में. ट्री मतलब बेसिकली रूट नोड दे रखी होगी और एक के दे रखा होगा. हमें पता है हम पहले ऐसा कुछ करेंगे कि हेल्पर फंक्शन रूट राइट some calculation and then helper root left. अब वी सॉ ट्री, लेट्स से सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि अगर रूट इज नल, सो बेसिकली रिटर्न, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते. बट लेट्स से वी हैव वन, एंड आई होप द क्वेश्चन मेंशंस कि देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट एन आंसर. आई थिंक दैट्स प्री अज्यूम्ड कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास नोड्स ही तीन है और ये बोले फिफ्थ लार्जेस्ट दे दो. You don't need to print anything. The sum of this is not going to be more than this. Kth skillful manager print करो और k और n में relation. हाँ, it's specified कि k will always be less than equal to n. So we can assume answer तो होगा. तो let's say हमारे पास एक ही नोड है वन एंड वी आर टोल्ड कि गिव अस द फर्स्ट वन. सो इन दैट केस k इक्वल्स वन. हम इसके राइट में जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. फिर हम इस पे आ जाएंगे तो बेसिकली लेट्स से द number of the number of nodes to its right are 0. So let's say this is 0 and 0 plus 1 is 1. So we'll know this is the first node. So we'll return 1. ठीक है, let's take a more general case to see कि logic क्या बन सकता है. So बेस केस तो हमें समझ में आ गया कि रूट नल होगा तो रिटर्न कर दो. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है. ठीक है, एंड वन भी करते टू भी करते, मतलब सारे देखते कि कौन से लेवल पे कौन सा है और वो कैसे फिगर आउट कर सकते. सो वी नो कि हम पहले राइट में आएंगे. यहाँ पे कुछ नहीं है तो नंबर ऑफ नोट्स ट्रेवल्ड इज 0, सो दिस इज द फर्स्ट वन. अगर हमारे पास वन है तो वी नो कि वन कैसे रिटर्न करना है. सो द नंबर ऑफ नोट्स ट्रेवल्ड एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं. तो वन हो गया. अब इसके बाद इसके हम यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे कि अब तक हमने वन ट्रैवल किया है तो यू आर सेकंड. तो टू आएगा तो नंबर ऑफ नोट्स ट्रैवल्ड इज टू, सो वी कैन रिटर्न दिस इज द सेकंड वन. अच्छा ठीक है, लेट्स टेक अ बेटर केस. थोड़ा बड़ा ट्री लेके देखते हैं. देन फाइव है, थ्री है, सो दिस विल बी वन. इससे पहले हमने कितने नोड्स ट्रैवल किए, वन, तो दिस इज द सेकंड नोड. फिर हम इसके लेफ्ट में आएंगे, हम इससे पहले दो ट्रैवल कर चुके हैं, सो दिस विल बी द थर्ड वन. So maybe the logic can come down to if nodes traveled equals k, कि मतलब हमें kth चाहिए और हम kth वाले पे हैं अभी बिकॉज हम उसी ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है. तो रिटर्न मे बी रूट और वी कैन स्टोर द आंसर समवेयर देन रिटर्न आंसर. बट हाउ विल वी नो ऑन विच नोड आर वी. तो लेट्स से हम एक हेल्पर फंक्शन का एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. k तो पास करेंगे ही, नोट्स पास कर देते हैं इसको. And after you've done something here, you can increment nodes by one. मतलब every time you travel something, and because this has to be consistent for all, तो ये reference की तरह पास होगा. हाँ, I think this will work. हम right में गए, हमने increment कर दिया. नंबर ऑफ नोड जब हम काउंट करते हैं तो हम ऐसे ही कुछ करते हैं, इसको रेफरेंस में डालते हैं, ऐड करते जाते हैं. फिर लेफ्ट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल नो कि हाँ अब तक दो ट्रैवल हो चुके हैं, तो अब इंक्रीमेंट करके इसको थर्ड कर दो. व्हेन
this becomes the root which it is supposed to be calculating on. ठीक है, ठीक है, चलो we can try implementing this. इसमें कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो, मैं फिलहाल कोड करना शुरू कर देती हूँ. ठीक है. सो वी लेट्स फॉलो द अप्रोच कि हम आंसर कहीं स्टोर कर लेते हैं. सो this will be 10 raised to 5, so we don't need long. Int answer equals -1 से it can be initialized to anything which is not a part of already present answers. So 0 will work, -1 will work, int minimum will work, और int maximum because 10 raised to 5 के आगे ये जा ही नहीं सकता. So उसके बाद int nodes, we've traveled nothing so far, so it will be 0. Then we have to call a helper function, pass it the root, k, nodes and answer. हमारा helper function कुछ कुछ करेगा and then answer में answer store हो जाएगा and we can return answer. ठीक है, so let's create our helper function. Void helper. If you all want to stop me in between कि you want some time to maybe try the question itself or there are any doubts कि हमें ये भी कर सकते हैं, so do let me know and we can talk about the heap. Akhilesh, I like to know the approach और I'll try कि हाँ heap से क्या कर सकते हैं. So void helper, अब इसमें हम क्या क्या पास कर रहे थे, रूट पास कर रहे थे, then int k, int nodes, and we discussed कि this has to be passed by reference and int answer. And since answer हम यहाँ पे return कर रहे हैं, so even this will be reference, क्योंकि अगर इसका खुद का if this is not reference तो वो हर फंक्शन अपना अलग कॉपी क्रिएट करेगा और लास्ट में हमारे आंसर में सिर्फ -1 स्टोर रह जाएगा. So that's not we want. If root equal null, return don't do anything, then we'll call helper root, right? We'll pass it k, we'll pass it nodes, and we'll pass it answer logic, and then we'll call left k, nodes and answer. Our logic was कि पहले तो nodes increment करो कि हाँ हमने ये वाला particular route node travel कर लिया, and then check if nodes has become equal to k. If so, then store it in answer. So answer equals datum, root का datum. Then maybe we can add key, मतलब to avoid extra computations, key if the nodes number of nodes travels becomes greater than equal to k, even then you can return, क्योंकि equal to होगा तो हम आंसर ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं. सो हम यहाँ पे ग्रेटर भी डालेंगे तो इट्स नॉट एन इशू, बट इफ यू फाइंड नंबर ऑफ नोड्स ऑलरेडी ट्रेवल्ड हैज बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू के तो फिर रिटर्न कर दो, कोई जरूरत नहीं है कंप्यूटेशन करने की. चलो नाइस. पास. मे बी वी कैन टॉक अबाउट हीप नाउ कि हीप से कैसे कर सकते हैं. हम्म. सो लेट्स से आर ट्रीज जो हमें ओरिजिनल एग्जांपल में दिया हुआ था 9 and after root right recursion I can simply k minus minus, and if k equals 0 answer equals. I think this will work. Maybe let's try coding this, changes करके देख लेते हैं. मुझे लग रहा है कि this should work. So after root right recursion I can simply do
k minus minus, and if k becomes equal to 0, then do this, and if k becomes negative, kindly return. And in this case, we'll not need nodes while a variable itself. So we got wrong answer for a particular case. Let's see. मैंने इम्प्लीमेंट तो सही किया ना इसको, कि हमने आंसर पास किया, के पास किया, हमने के माइनस माइनस कर दिया, के इक्वल 0 तो आंसर में स्टोर कर लो, एंड इफ के बिकम्स लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो. So why is this case failing? Let's see. 7972915 minus 1 and 14, and we want to find second. अच्छा हाँ, K will be passed as reference. हम्म चलो, this works fine. हाँ, even ठीक है. K will be, हाँ, this was the thing कि K should be passed as reference. अच्छा, ओके, ठीक है. सो हीप के बारे में डिस्कस करना है अभी भी, या वी शुड फर्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई विल से कि चलो, मतलब हीप में व्हाट आई थिंक इज पॉसिबल कि हम सब नोड्स पे ट्रैवल करें, प्रायोरिटी क्यू बना के उसको स्टोर कर लें, और फिर पॉप आउट करते जाए. दैट इज वन थिंग, बट इट द सॉल्यूशन that we tried currently does not require extra space in terms of creating a priority queue. Recursion में auxiliary space count होता है, that is different, but excluding that, we are not using any extra space. So this is an order n solution, time complexity wise and space complexity wise. Ignoring recursion stack, it will be order 1. If we try creating a priority queue, that will require order n extra space, कि हम सब nodes को travel करके उसमें डाल रहे हैं, and then we are trying to pop it out कि हाँ इतना एक हो गया है. मतलब हम जब pop कर रहे होंगे तो we can make a count variable or keep incrementing it, and when c equal k, that's when you can return कि हाँ जो particular top है इस time priority queue का, that is supposed to be your answer. That is one way of going about heap. Heap में हम और कुछ कर सकते हैं क्या? Anyways, मतलब we can try thinking about it, but since it will require extra space, this is anyways not optimal. So next question. Bond villains. James Bond has a special gun whose bullets are unstoppable. However, since it's a really expensive gun, there are only two bullets in it. So we have two bullets. There are n villains standing in a room to attack him, with each represented by a pair of 2D coordinates. Okay, so it was a 2D array of size n, and each part will be x and y.
If a bullet is shot from a particular point in a particular direction, all the villains in that line die. Your task is to see if it is possible to eliminate all villains using at most 2 bullets. तो इसका मतलब 0, 1, 2 इतने बुलेट्स में काम हो जाएगा, तो हमें कुछ रिटर्न करना है। हाँ, यस रिटर्न करना है। There is at most one villain at each point, so X and Y are supposed to be unique in this particular 2D array. Also, it is possible for one villain to get hit by both bullets. ठीक है. So basically, it's asking us, the question basically transforms itself into key find out if given vector can have points that form at most 2 lines. मतलब there is an example given. So the points are these pointed out on a graph make two particular lines. So it's like कि दो lines हैं, हमने अगर ये position A से bullet shoot की तो these three will die, और B से shoot की तो these two will die. So all are eliminated. So the question is basically हमें एक points का वो दिया हुआ है vector जिसमें काफी सारे coordinates हैं, and since we have 2 bullets, so only मतलब ये अगर दो लाइन बना रहे हैं तो एक जगह से शूट करो एक लाइन खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह से शूट करो दूसरी लाइन खत्म हो जाएगी। एक ही लाइन है तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर टोल्ड कि एट मोस्ट 2 बुलेट्स हैं। अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हैं सो इवन दैट इज फाइन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर कि पॉइंट्स वेक्टर को डिवाइड करो टू फाइंड आउट कि क्या दो लाइन बन रही है। ठीक है। So we have a vector of pair int comma int and then its name is points. उसमें एक्स वाई है हर उसके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट, लेट्स से x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। सबसे बेसिक से शुरू करते, तो लेट्स से वी हैव ओनली मतलब द पॉइंट्स का साइज इज 1। सो इन दिस केस बिकॉज वी हैव ओनली वन विलन, कहीं से भी शूट करो हील डाई। ठीक है। सो इफ n equal 1 we have to return yes. Let's say there are two villains. अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। सो इफ एन तो वो एक ही लाइन बनाएंगे। सो इफ एन इक्वल टू यू हैव टू अगेन रिटर्न यस। देयर आर 3 विलेंस। तो अब इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है। दो एक लाइन पे लाई करते हैं विच इज अ प्रॉपर्टी, और तीसरा नहीं लाई करता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसको ए बुलेट से शूट करो, इसको बी बुलेट से शूट करो, एंड दीज थ्री विल एनीवेज डाई। अगर ये वाला केस है तो ए से शूट करो एंड ऑल ऑफ देम विल डाई। सो इफ एन इक्वल 3 अगेन रिटर्न यस। 5 5 तो हमारे पास लेट्स से चार है विलन। तो देर आर केसेस कि चारों एक लाइन में लाई करते हैं, जिस केस में यस रिटर्न होगा। तीन एक में लाई करते हैं, एक अलग है तो ए एंड बी कर सकते हैं हम इस चीज को, फिर से यस रिटर्न होगा। दो एक साथ है और बाकी दो एक साथ है तो ए और बी हो जाएगा। तो इवन फॉर 4 आई थिंक दिस कम्स अंडर बेस केस कि अगर तुम्हारे पास चार या चार से कम विलन है तो आंसर विल डेफिनेटली बी यस। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? तो आगे ट्राई करते हैं। तो इफ वी हैव 5, क्या हम इसको भी ऐसे किसी केस में put कर सकते हैं? सो लेट्स राइट द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट।
हमारा ऑब्जर्वेशन अब तक था कि ऐसा होगा तो यस रिटर्न करो। अब हमारे पास 5 पॉइंट्स है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि पांचों एक लाइन में होंगे, चार एक लाइन में होंगे, एक साइड होगा, तीन एक लाइन में होंगे, दो एक साइड होंगे, दो। दिस इज नॉट नेसेसरी कि तीन एक साथ होंगे, बट दो ऐसे होंगे, ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नीड नॉट बी विद दीज टू, वो अलग भी हो सकता है। सो फोर विल डेफिनेटली फॉर्म, मतलब इसमें से दो तो कोलिनियर होंगे ही, बट जो फिफ्थ पॉइंट है हम उसके लिए श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो इनके साथ ही कहीं लाई करेगा। मे बी इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल विद दिस वन, ऐसे हो सकते हैं तीन पॉइंट्स। सो विथ व्हेन n becomes greater than 4, that is when we have to find out कि सब पॉइंट्स बेसिकली दो लाइन बना रहे हैं कि नहीं। हम्म, दो लाइन बना रहे हैं कि नहीं। अब so there are points x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5. So what we can try is कि since हमें पता है कि दो पॉइंट्स है तो कोलिनियर होंगे ही, तो वी कैन टेक दीज टू। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, या फिर एक लाइन है उसी पे वो पॉइंट है कि नहीं? बाय स्लोप, स्लोप चेक कर लेने का। सो द फॉर्मूला फॉर checking slopes is basically y2 minus y1, x2 minus x1 equals, if this holds true, that means all the 3 points are collinear। ठीक है, तो लेट्स से कि वी दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, तो दीज आर 3 4 1 टू मेक अ लाइन। उसके बाद हम अज्यूम कर लेते कि चलो वन टू ने एक लाइन बना ली, डेफिनेटली बना ली, जिसका स्लोप है m। फिर हम चेक करेंगे क्या थ्री इस लाइन पे प्रेजेंट है। देर आर देर आर ओनली टू केसेस कि या तो वो प्रेजेंट है या नहीं है। इफ इट्स प्रेजेंट तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू कर लो। नहीं है तो इट मीन्स थ्री लाइज ऑन सम अदर लाइन। So when we come to 4, so there is a chance either 4 lies on this line, either it lies on the line with 3, either, हाँ, अभी के लिए सिर्फ दो possibilities consider करते हैं चलो, कि it will either lie on this particular line with slope m, or it will not। ठीक है, same goes with 5, either 5 will be on this particular line or 5 will not be। So let's assume कि 3 lies but 4 and 5 don't। 6 पॉइंट ले लेते हैं चलो, 5 6। So let's say 1 2 and 3 lie on this line, but 4 5 6 don't। So we've stored these indices somewhere else, and then we have to check कि अगर ये एक सिंगल लाइन बना रहे हैं तो आर आंसर इज यस, क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ ऑलरेडी बना ली और हमने वेरीफाई कर लिया कि जो बाकी बचे हुए सारे पॉइंट्स थे वो सब भी एक पर्टिकुलर लाइन बना रहे हैं। सो इफ दैट इज द केस वी विल रिटर्न यस। एंड इफ ऐसा होता है कि ये एक ही लाइन नहीं बना रहे, so there, it's not like you will directly return no, there can be a possibility कि there is some other line, some other distribution, like कि 3 और 4 ने जो लाइन बनाई उस पे 5 और 6 लाई करते हैं, उसका स्लोप होगा m डैश, उस पे ये दोनों लाई करते हैं और ये दोनों कहीं और लाई करते हैं। सो यू हैव टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट लेट्स ट्राई कि हाँ ये कैसे करेंगे, देन वी विल सी इफ optimizations are possible। So what we've discussed until now, we will check all possibilities. We'll take, we'll take a point one and a point two. Let's make it more generic. We'll take a point I, we'll take a point j, and then we'll check do all points. No, we'll not do all points. We'll basically, if p k lies on, इन दोनों का slope है let's say m, lies on line with slope m, तो it's fine, कंटिन्यू कर लो। एंड इफ इट डजंट, तो
स्टोर पॉइंट के, ये कर लो। हम आई जे का अलग लूप चलेगा, बट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि हमने 2 पॉइंट्स पिक कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? So PK lies on this to continue, otherwise store PK. And after you come out this particular loop कि हाँ हमने ये सब चेक कर लिया, then we'll check if हमने इसको स्टोर किया, let's say एक वेक्टर on same, नहीं, let's name it properly. You should always name your variables very meaningfully. Not on ij, it's not on line ij, or let's say not on line with slope m, not on m. आईजे seems better क्योंकि हमने m कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ, नॉट ऑन आईजे। सो वील डू कि चेक नॉट ऑन आईजे। अब ये चेक फंक्शन क्या करेगा? इट विल चेक कि डू ऑल द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वेक्टर lie on the same line, and how will it do that? तो लेट्स से इसमें कुछ, ये वापस ये हो जाएगा कि अगर नहीं, इसमें ये नहीं चलेगा, बिकॉज n equals 4 फॉर्म्स 2 लाइन्स। अब हमें ये चेक करना है कि दे lie on वन सिंगल लाइन। So इस केस में if n is less than equal to 2, तो you'll return yes. Otherwise, you can take any 2 points in this particular. Let's let's take 1 and 2 for simplicity. 0 and 1 indexes start from 0. So I took points 0 and 1, and then I'll check ये दोनों कुछ स्लोप बना रहे होंगे m dash, तो जो बाकी पॉइंट्स है वो सब भी अगर कोलिनियर हैं तो कंटिन्यू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो फ्रेमिंग इट बेटर, तो ये हमने चेक कर लिया। तो चेक वाला क्या करेगा? इट विल टेक पॉइंट्स 0 1 एंड लेट्स से सम z विच इज, इसका साइज है 0 से z-1, हमने यहाँ पे 1 ले लिया, सम z हियर। सो इसके इंडेक्सेस इतने हैं, मैं कोई रैंडम पॉइंट की बात कर रही हूँ z, एंड इट विल चेक इफ दे आर कोलिनियर। इफ दे आर, फाइन। इफ दे आर नॉट, देन रिटर्न फॉल्स। Now what we have to do, we have to check, हमें ये सोचना है कि how will we check if 3 points are collinear. यहाँ तक I hope this makes sense to everybody. If there is any doubt until now, please let me know. ये question समझ जाना चाहिए। If no, then I'll continue कि कैसे हम देख सकते हैं कि are 2 points or 3 points collinear or not. 2 points are always collinear. ठीक है, I don't think there's any doubt. So we'll move on. How to check if a point is collinear. So we talked about a formula. But in programming, using division cannot always give you the right result. Like 5 by 2 will be equal to 4 by 2. So that's wrong. Do not use this. Mod word use karna padega, but I think there's a simpler way because of the formula, because we want them to be equal to 0. So there are 3 points. So इसको इस साइड शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये वाला कैंसिल। So this will basically become पॉजिटिव कर देते हैं इधर सबको शिफ्ट करके, तो x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 में जब हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो पहले y1 आ जाएगा,
and this will be positive. हमने दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया है तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव. So y1 minus y3 plus ये वाला part x3 y2 minus y1. This has to be equal to 0. And if this holds 0, then we can return true. कि हाँ, these points are collinear. So let's try coding this approach. So hmm, so we decided कि सब points लेके देखने हैं. For int I equals 0, I is less than n, I plus. Now we have to basically check. So for check we'll pass I, J and points कि अगर इन दोनों के साथ बाकी सबका डिवीजन हो रहा है कि मतलब I, J make a line. So check for all points on same line and others on one single line. So check लगा रहे तो if डाल देते हैं कि if this returns true, so we can simply do return yes कि हाँ we got our answer. Otherwise just keep on continuing and बीच में कहीं भी break नहीं होता है तो in the end you can simply return no. ठीक है, अब हमें check function बनाना पड़ेगा. int I, int j and points. Passing it by reference or not will not make much difference here, but since it won't change at all, I am passing it as reference. अब हमें इसमें क्या करना है? So we know ij is making a line, so we have to check for the ones that are on the same line and store the others in some other vector. So let's make a vector not on ij, and then we can do for int I equals, I already defined it, so k is less than points dot size k plus plus. Then ये तो बेस हमने यहाँ पे बेस केस ऐड नहीं किया. If n is less than equal to 4, directly return yes. Now if we encounter the same points ij, so please don't do anything. So don't do anything means continue. Next was if collinear. What is collinear? I ij के बदले let's pass the points properly. तो points at I, points at j, points at k. ये तीन point check करो. We don't have to pass the points पूरा vector there. So if this is collinear तो continue. And if this is not, तो ये last में आ जाएगा. तो not on ij dot push back points at k. Now check on same line, not on ij. तो ये चेक करेगा कि ये सेम लाइन पे है कि नहीं. तो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न, यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न दिस पार्ट. सो वी हैव टू मेक अ कोलिनियर फंक्शन नाउ. सो कोलिनियर and it expects pairs. I, j and k.
and we have to write the formula here. So तीन चीजें ऐड करनी थी, तो constraints 10 raised to 9, so we'll take long a equals, because these are all present in int and we are converting it into long, so multiplying it so that there is no loss of value. अब इसमें हमें क्या करना था फॉर्मूला, so it was x1, so I dot first multiplied by y3 minus y2. Y3 is k dot second, y3 minus y2, then equals 111 into x2 y1 y3 to x2 y1 y3 x3 into y2 y1 y2 y1, and then return a plus b plus c equal 0. तो ये कोलिनियर हो गया. Now the last function is check on same line. So check on same line and it expects a vector. ठीक है. अब इसमें क्या करना था हमें, फर्स्ट वाज कि इसका साइज एक जगह स्टोर कर लो. सो इन n equals not on ig dot size. बेस केस वाज कि एक ही लाइन बनाए तो उसके लिए दो होना चाहिए. इफ n is less than equal to 2 return true, and if it's not true तो go to other points. हम 0 और 1 को ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि उनसे जो लाइन फॉर्म होगी, तो हम बाकी पॉइंट्स को चेक करेंगे. सो इंट आई 2 से शुरू करेंगे. आई इज लेस देन n बिकॉज वी हैव टू चेक ऑल द पॉइंट्स. आई प्लस प्लस इफ कोलिनियर. कोलिनियर क्या होना चाहिए, पॉइंट्स एट आई जे 0 not on ij1 not on ij2. If this is true then you can continue, otherwise return false. तो इसको हम डायरेक्ट नोट कर देते हैं. If they are not collinear then return false, and if तुम बीच में return false नहीं करते हो तो return true. I think this basically sums it up. Let's try running the code. Some test case failed. कोड में कुछ गलती है. अच्छा हाँ, if it is less than equal to 4 then return yes. हमने हर पॉइंट चेक किया. i इज इक्वल टू 0 लेस देन n, i प्लस प्लस यहाँ पे j लिया. i j पॉइंट्स को चेक करो. इफ इट रिटर्न्स ट्रू देन रिटर्न यस, अदरवाइज नो. देन हमने चेक फंक्शन बनाया, एक वेक्टर बनाया. हमने चेक किया अगर हम सेम पॉइंट्स पे आए तो कंटिन्यू, या फिर वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आई जे के तो कंटिन्यू, अदरवाइज एल्स लिखना नहीं. कंटिन्यू है तो हो जाएगा, वरना ये यहाँ पे पुश हो जाएगा. देन रिटर्न व्हाट दिस पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न्स. ठीक है. तो हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे इसका साइज स्टोर किया. इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 2 वी रिटर्न ट्रू. I is equal to I is less than n, I plus plus. So if it is not collinear, 0 1 and 2 नहीं, यहाँ पे I आएगा. This passed. Time limit exceeded. Hmm.
My major language that I basically code in is C++ and I'm comfortable with that. जावा में जो इंडस्ट्री में कोडिंग होती है वो तो एपीआई बनाने वाली होती है ज्यादातर, उसमें हम वेक्टर वगैरह तो नहीं यूज करते, तो आई थिंक सी प्लस प्लस माइट वर्क हियर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद जावा आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट इन जावा. If time persists, I'll try to do it in Java. So this basically gave us time limit exceeded. That means कि optimization is possible. हमारा solution हो रहा था n n square check में एक और ये तो n cube. तो this is an n cube solution and we do cannot use. So we cannot use an n cube solution here. N is 10 raised to 5. So n square भी नहीं होगा. This has to be an order of n problem. सो ये वाले दोनों लूप्स हटेंगे, दैट मीन बिकॉज चेकिंग वंस कि आर ऑल पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट इज नेसेसरी. ये वाला चेक नहीं हटेगा. दिस विल बी रिमूव्ड. हाउ विल दिस बी रिमूव्ड? लेट्स ट्राई लाइन की कोई प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट शोइंग माय माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड. चलो फिर उधर ही ट्राई कर लेते हैं, क्रोम टैब में ही. व्हाट एल्स कैन वी डू? तो दिस हैज टू बी रिमूव. तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं. नाउ लेट्स ट्राई कि और क्या हो सकता है. तब तक हम क्या कर रहे थे, हम हर पॉइंट पे चेक कर रहे थे, बट डू वी नीड टू चेक ऑन ऑल द पॉइंट्स फॉर दिस? सो ओके, सो देर आर, लेट्स से स्टार्टिंग के जो तीन पॉइंट है 0 1 एंड 2. इफ द आंसर इज सपोज टू बी यस, तो दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स में जो लाइन फॉर्म हो रही होगी, या तो 0 1 वाली लाइन, या 0 2 वाली लाइन, या 1 2 वाली लाइन. ये जो तीन लाइन फॉर्म हो रही होंगी, बाकी सब पॉइंट्स भी इन्हीं तीन लाइन में किसी एक पे आएंगे, या फिर एक सेपरेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे. तो देन वी हैव टू रिटर्न यस. बट इफ इट डज नॉट होल्ड ट्रू, तो दैट वुड मीन कि देर आर मोर देन टू लाइन्स. Trying, if I have to explain this better, so take the scenario कि हाँ दो ही लाइन फॉर्म होंगी. So in that case, the starting points 0 and 1, there are two cases कि either they'll lie on the same line or they won't lie on the same line. So if 0 and 1 lie on the same line, तो that will mean, और हमें पता है कि आंसर yes return होना है, मतलब we are assuming कि दो ही line form होंगी. So if 0 and 1 are on the same line, so other points will be on 0 1's line or on some one single line. Then yes return होगा. 0 और 1 अगर सेम लाइन पे नहीं है और हम चाहते हैं कि यस रिटर्न हो, तो दैट विल बी कि या तो सब पॉइंट्स 0 और 1 ने लाइन नहीं बनाई, तो 0 और 2 एक लाइन बना रहे होंगे. अगर सब पॉइंट्स या तो 0 2 वाले पे हैं और 1 किसी और लाइन पे है, सो देयर इज अ लाइन बाय 0 and 2 एंड देयर इज सम अदर लाइन दैट 1 इज ऑन. सो इफ दैट इज द केस, तो वील रिटर्न यस. अदरवाइज 1 2 वाला भी सेम है. अगर ये नहीं होता है कि यही तीन केस, आई थिंक हाँ यही तीन केस चेक होंगे, क्योंकि या तो 0 1 एक लाइन पे होंगे, या फिर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 से लाइन बना रहा होगा और एक अलग लाइन पे होगा. और अगर ये तीन में से कुछ नहीं होता है, तो दैट विल मीन कि देर आर मोर देन टू लाइन्स. तो let's try what I'm trying to say here. I hope what I'm trying to say here makes sense.
कि दो ही लाइन चाहिए, तो दिस हैज टू होल्ड ट्रू, मतलब ये तीन में से एक ना एक केस तो होना ही चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि वी हैव टू रिटर्न नो। सो वी कैन डू कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो चेक इफ चेक 0, 1, पॉइंट्स इज ट्रू, या तो चेक 0, 2, पॉइंट्स इज ट्रू, या तो 1, 2, points is true, then return yes. वरना ये इनमें से एक पॉइंट कोई थर्ड लाइन पे ही होगा, एंड हेंस आवर आंसर विल नेवर बी yes. हम्म, चलो. So this we directly converted our order of n cube to order of n, and it passed. I hope you all understood what we say. क्या कहते हैं? All the four questions. Is there any other approach or question or any solution that you particularly want to discuss or ask about? Otherwise, we'll end the live here. I don't think there's any doubt about any solution or question. So we can end the live. Thank you so much.